Okay, no, I think I should change it. Okay, let's look at it. Let me look at it. देखो एक Hello, bro. Hi. कैसे हो आप लोग? Okay. मैं मैसेज पिन कर रहा था यार. Hello, Murtaza. I am so confused about my career. Suggest me something. What are you interested in? What are the things that you do in your daily life? What do you spend your time doing? What kind of content do you consume? What are your hobbies? What is something that fascinates you? Those are things which are going to help you answer the question about what you could think about making your career in. All right. आप क्या करते हो भैया? मैं ये करता हूँ भैया जो अभी कर रहा हूँ. यूट्यूब. I was doing government exam preparation and now I'm so tired of it. I want to switch my career but so confused about it. Don't know what to do. What you can do is that you can directly opt for jobs right now. Some maybe customer service level jobs, something that you can just start making money from. And as soon as you start making some money, right, even some money, I think that's better, considering the position that you are in. I understand that when you're preparing for government exam, that can get really depressing. Just preparation for any sort of an exam can get very depressing.
So take a while, take some jobs up and start making some money. And as you do it, you can keep your hobbies intact. In the free time that you get, do your hobbies, okay? And whilst you do your hobbies, you're eventually going to figure out things which you like enough, and you can think about making or starting your career in those things. But for now, I would suggest for you to really go and get a job, any sort of a job, really, any job that you are qualified enough for, even if it be a admin desk job, like a basic job. रीसेट योर पास्ट चैनल सेम आपके जैसा है सर, कोलैब करो. Reset your past channel, let me check that out. Reset your past, reset your past. ये मेरा जैसा तो नहीं लग रहा है यार ये चैनल, क्या मतलब मैंने अगर सेम खोला है, मेरे जैसा तो नहीं लग रहा है यार ये चैनल. क्या कोलैब करूँ यार मैं. I want to open YouTube channel, but it's long term career. I teach in home tuition, but not much earning on that. Okay, you're already making like some money out of tuition. If that's what is the case, then you can start or consider joining a coaching in the time that you have left in your free time. When you're not teaching, when you're not doing some tuition work, you can actually join a coaching for teaching. That's my suggestion. And while you do that, you can work on your YouTube channel, whatever on the side. You remember I asked a question about where to do the BSc Mumbai or my bad city Satra. You know, people are telling me the university matters. Do it really that important to get a good university? If you ask me, no. If you ask me for BSc, no, it does not matter. Universities in general are becoming more redundant. Like the concept of you being in a whatever university, nobody will care. It's more about skills. Unless you are in a tier 1 college, which is like an IIT or an IT. Otherwise, it does not matter. It's all the same. I actually was making the same amount of money that my friend did from apparently a renowned university in Pune, while I was in Kolkata, and I still like did my own thing from my college, and I was still able to make the same money as a fresher. By the way, I'm talking like from like a fresher's perspective. So it really doesn't matter. It's more about the skills. It's more about what you can do in your college time and how you are actually utilizing your time. If you are actually learning some things, if you are actually making yourself employable, then you are going to like end up getting whatever you want. But yeah, of course, there's some tiny percent of difference between universities. Like some universities will like bring a better companies than the other ones. But if you ask me in general, then no, it does not matter. If it's a tier 3 university or a local university. Okay. Yeah, I'm interested. But I did tell you, right, that going to Mumbai would actually give you a lot of opportunities. Like you would have the chance to make more money from universities in Mumbai, because like the salary would be higher, of course, but as a result, the living cost would be higher as well. So it would basically like self adjust. Yeah, I'm interested in home decor and think of making crochet, resin art, and so many things, but also so confused. Tripti, whatever you're thinking about, none of that right now is like a short term thing, right? So, like, all of those things will take a lot of time. And also, rather than just thinking about it, I would suggest for you to actually take a concrete step. Uh, right now, whatever you're thinking about, all of those things are just options. All of those things are just like thoughts. And those are not enough. You're going to have to put in action. So I would suggest for you to choose something, just choose anything and just start with it. Start doing it every day. So that at least you have some sort of a base, at least you have some sort of thing, something that gives you purpose, something that makes you feel good. Future demanding skills, batao bhaiya. Thinking, improving your mindset, thinking like uh,
थिंकिंग लाइक इन अ फर्स्ट ऑर्डर, लाइक थिंकिंग इन द लॉन्ग टर्म, जो मतलब बेसिकली जो नॉर्मल लोगों से अलग होकर सोच सकते हैं ना चीजों के बारे में, जो ट्रेंड्स पैटर्न्स ये सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, आई थिंक दैट इज द बेस्ट स्किल दैट यू कैन हैव, लाइक फ्यूचर प्रूफ स्किल दैट यू कैन हैव। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। अब नॉर्मल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ पैसों को लेकर, ठीक है, मनी माइंडसेट, ठीक है। सो लेट्स से यू आर हंग्री, नाउ यू वांट टू फिल योर स्टमक, राइट, आपको कुछ तो खाना है जिससे आपका पेट भर जाए। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कोई बिस्किट ऐसी कोई चीज खा लो जो आपके पास अवेलेबल है और आपका पेट भर दो, ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि यू ईट समथिंग हेल्दी, ओके, विच माइट कॉस्ट मोर एक्चुअली। You don't eat biscuits, you don't just eat whatever is around you, you design things in a way कि जहां पे आपको कोई अच्छी चीज खाने का ऑप्शन हो। बेसिकली ईट लाइक यू स्पेंड मोर मनी बट यू ईट समथिंग बेटर, ठीक है। तो इन द लॉन्ग टर्म व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू पे यू बैक मोर? आपको भूख लगी, आपने बिस्किट खा ली, आप पूरे लाइफ बिस्किट खाते रह गए, अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी हेल्थ पे इंपैक्ट आएगा लॉन्ग टर्म में। एंड व्हाट विल, एंड अगर आपकी हेल्थ में इंपैक्ट आया तो वो सारी चीजों को खराब कर देगा। आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे, अगर आप काम नहीं कर पाओगे तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे, आप पैसे अच्छे से नहीं कमा पाओगे तो आप आपकी लोगों से रिश्तेदारी खराब होगी, बिकॉज व्हेन यू नॉट अर्निंग मनी यू बिकम बिटर, यू बिकम रिजेंटफुल, ठीक है। वर्सेस अगर आपने ज्यादा रिस्क लेकर, आप रिस्क तो नहीं लेकिन मतलब आपने थोड़ा सोचा, आपने अपना दिमाग का यूज किया एंड आपने देखा यार कि मैं मेरे अगर मुझे भूख लगी, मुझे बार बार लगने वाली भूख, तो मेरे को ऐसा फूड खाओ जो एक्चुअली मुझे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देगा, मुझे एनर्जी भी देगा और हेल्थी भी होगा साथ साथ में। तो आपने बिस्किट की जगह यू चेंज्ड अप योर डाइट and you actually invested in your diet, and as a result you will also like that will start showing up in your work, you will start thinking better, and as a result अब देखो मतलब कंपाउंडिंग होता है। अगर आपने अपनी एक अच्छी हैबिट लाई ना अपने लाइफ में, तो आपकी दूसरी हैबिट्स अपने आप आती है छोटी छोटी करके, आस्ते आस्ते करके। बट हाँ, हमारे पास हमेशा ऑप्शन होता है कि वी स्टिक टू आवर बैड हैबिट्स। हम और बहुत चीजें तो मतलब बिना अवेयरनेस के होती है, बहुत चीजें लोगों को पता ही नहीं होती। बट आई वुड नॉट से दैट राइट नाउ इन द डे एंड एज दैट वी आर इन, अवेयरनेस या इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देख लो इंटरनेट पे कितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ग्राहक अब कंप्लीटली जाग गया है, तो सबको सब कुछ पता होता है अब। सो इन दिस डे एंड एज आप ये नहीं पूछ सकते यार मतलब या ऐसे नहीं बोल सकते कि यार मुझे नहीं पता था। आपके पास वो बहाना ही नहीं है, आपके पास रिसर्च करने का ऑप्शन है। यू आर जस्ट वन क्लिक अवे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो सोचना सोचना आई वुड से इज लाइक अल्टीमेटली द अल्टीमेट स्किल, मतलब जो फ्यूचर प्रूफ स्किल है। थिंक अपार्ट फ्रॉम अदर्स, मतलब लॉन्ग टर्म की सोचो और पैटर्न के हिसाब से सोचो। देखो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, लोग कैसे सोच रहे हैं, और उनसे अलग अलग एक्शन लो। क्योंकि मेजोरिटी जो लोग हैं ना वो बिना सोचे अपने एक्शन लेते हैं, वो सिर्फ दूसरों की सुनकर या तो दूसरों को कॉपी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ताकत है खुद के लिए सोचने की, तो आप अपना अलग पाथ बना सकते हो और आपको किसी से डर भी नहीं लगेगा। सो दिस इज वन स्किल दैट यू नीड टू डेवलप, कि गहरा सोचना। और ये ओवर थिंकिंग वाला सोचना नहीं बोल रहा हूँ कि यार ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, अच्छा ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो वाला सोचना नहीं। गहरी गहरी थिंकिंग, लाइक डीप थॉट। क्या पैटर्न्स को देखो कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, पहले क्या होता था, अब कैसे हो रहा है, क्या बदल रहा है, व्हाट आर द पैटर्न, व्हाट कैन ऑब्जर्व अदर पीपल डू। डोंट लुक एट व्हाट पीपल आर सेइंग, ऑब्जर्व देयर एक्शंस। क्योंकि लोगों की कहने की बात अलग होती है और उनके एक्शंस अलग होते हैं, लेकिन एक्शंस हमें दिखाते हैं कि एक इंसान कितना क्या कर रहा है एक्चुअली में। सो लुक एट दोज ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बेसिकली बिकम क्यूरियस, ठीक है, become like a child and you will find yourself living a really good life। एंड फ्यूचर प्रूफ स्किल के बारे में वही मैंने आंसर कर दिया कि सोचो सोचो, एक बच्चे की तरह सोचो। जैसे बच्चा हर चीज के सवाल पूछता है ना, आप भी सवाल पूछो, लेकिन ओवर थिंकिंग में मत स्टक रह जाओ कि यार इतने सारे ऑप्शन है, इसमें मैं क्या करूं। ओवर थिंकिंग वाला सोचने का नहीं बोल रहा हूं मैं। ओवर थिंकिंग एक बीमारी है, जितना आप ओवर थिंकिंग से इनफैक्ट अपने आप को दूर रख सको उतना अच्छा है। एक बार मैं तो कहता हूं कि आप गलती करके सीख जाओ, लेकिन ओवर थिंकिंग में मत फंसा करो कि यार अगर मैं ये कर लेता तो यार, अरे एक बार गलती कर लो कोई बात नहीं, फिर वो गलती बाद में सुधार भी लोगे आप।
लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो वो सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हमें तब नहीं पता चलता, हमें लगता है कि हाँ सेफ हूं मैं क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन वो बहाना नहीं होता ना। कुछ ना करना भी एक तरह का इनएक्शन, मतलब एक एक्शन होता है, बिगेस्ट एक्शन होता है वो आपको आपको दर्शाता है, पता चलता है कि हाँ मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि मैं अपने आप पर कुछ एक्शन लूं। इज बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन इज बेटर और बीसीए? बीसीए इज बेटर। Or and of course it depends on your ultimate goal also, like what is it that you are expecting to do. If you are expecting to get into the theoretical part, if you want to do some research related to computer science, then BSc is better. If you want to become a coder, if you want to do anything related to practical things, then BCA is better. If you want to explore the IT field, then BCA is better. BSc is more theoretical, but there are no restrictions. Okay, like anyone doing BSc can still get into IT. Anyone doing BCA can still get into IT. So at the end of the day, it's not worth the discussion. But if you want, you can choose any. Like if you have a preference, you can choose even BSc if you want. If you like the syllabus better, if you like the or like the structure of that syllabus or whatever college you are getting better. But it does not make that much of a difference. But I would personally recommend BCA, considering I have also done BCA. But that is all depending on if you actually like coding or what your end goal is, like for getting into BSc or BCA. If your goal is to just like choose that degree and then expect or hope that you will get placed, then no, that's not going to work. None of those degrees are like good enough for that. You will have to like the coding game right now, it's like you have to be like you have to compete with like lots and lots of people, and you have to be brilliant at coding. Only then like you can actually expect to get a job in computer science anymore. It's not like the olden times now where you just write some basic code and get a job. ब्रो प्रोटीन पाउडर कितने का पड़ा? 6,500 का पड़ा, लगभग 6,600, बिकॉज इट वॉज 2 kgs। 2 महीने का सामान है पूरा। एक दिन का मैं 25 ग्राम का स्कूप लेता हूँ, तो एक स्कूप उसमें 25 ग्राम निकल के आता है, टोटल 2 किलो है वो। ठीक है सर। टीयर 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में बताओ। प्राइवेट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सर, प्राइवेट प्राइवेट कॉलेज सारे, मतलब मुझे नहीं लगता दो किसी में भी फर्क होता है। सारे प्राइवेट कॉलेजेस मैं एक ही टीयर में डालूंगा कि मतलब सेम होते हैं, मतलब आप जो भी सिलेक्ट कर लो उनमें स्टैंडर्ड पैकेजेस वाले जॉब्स मिलते हैं, बहुत लोगों को नहीं मिलते, वही सेम सीन होता है यूजुअली। एंड कुल मिलाकर इफ यू आर इन अ प्राइवेट कॉलेज, आप खुद के दम पर ही किया करो, आप रिलाई ही मत करो कॉलेज पे कि हाँ कॉलेज मुझे प्लेसमेंट देगी। दिस शुड बी योर माइंडसेट कि मुझे कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, जो प्लेसमेंट है वो मैं अपने दम पे करूंगा, जो भी मुझे करना है मैं अपने दम पर ही हूँ। अगर आप पहले से ही माइंडसेट लेकर चलोगे ना, देन यू विल बी अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज मोस्ट पीपल आई हैव सीन। एंड इनफैक्ट मेरा भी था ये कहीं ना कहीं कि यार मुझे लगता था कि कॉलेज तो ले लिया, अब देखो डिग्री डिग्री तो मिल गई है, अब बाकी सारी चीजें वो कॉलेज ही देख लेगा, लेकिन कॉलेज घंटा कुछ नहीं देखेगा। हेलो भाई, मुझे करियर का कुछ समझ नहीं, मैं स्किप नहीं करता, क्वेश्चन तो और भी है इसके पहले। आई एम प्लानिंग टू डू बीएससी I'm planning to do a BSc computer application in my tier 3 college and then go to Mumbai for MCA, and also question is MCA worthy? वो आपको बीसीए करने के बाद पता चल जाएगा। बीएससी आपने जो भी लिखा हो, बीसी या बीएससी जो भी आप करने की प्लान कर रहे हो, you will find out. If you ask me, the MCA, like the syllabus in MCA and BCA is literally the same. It's the same thing. Okay. So if you really are interested in coding, or if you find out that one of the IT skills you really enjoy, you find something out, okay, then like BCA can be enough for you. You don't even need to go for MCA. But most people go for MCA only after they have not been able to find like a good job after BSc or BCA. But if you ask me in terms of syllabus, there is no difference. And also like it entirely depends on how hard you are willing to work to be somewhat in IT, because the levels are getting harder now.
You cannot just be basic at anything and expect to get good rewards or a good salary or a good life. You will have to be extraordinary. So only if you're interested in coding or anything in IT, only then you can expect, to get like a job or whatever your ultimate goal is while doing these degrees. Of course, I think it would be a job ideally. So myself, Jaydeep, from the start, I was sure that I will do chemical engineering, but now in my rank, I can't get it. So what should I do? Can I skip branch or get any colleges, any branch? Well, right now you only have an option to get whatever branch you can manage to get. I would, okay, you wanted to do chemical engineering. Well, you will have to look for wherever you can get chemical engineering from. And if you can't, then you might have to consider like giving a retest, even if you have to, like maybe give one more year of exam, I think. So get a rank so that you can actually do chemical engineering if that's something that you really want to do. Or if possible, like I don't know how it works for chemical engineering. I'm really sorry. That's all I know about it. हेलो भाई, मुझे करियर का कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने चार चार ऑलरेडी वेस्ट कर दिया। मुझे कैसे सही करियर चूज करूं? मैंने इसके ऊपर वीडियोस डाल के रखे हैं इन माय चैनल, तो आप देख लो। आपको डिटेल्ड एक्सटेंसिव वीडियो मिल जाएगी जहां पे मैंने माइंडसेट्स की बात की है, मैंने फ्रेमवर्क्स की बात की है, मैंने पैटर्न्स बताया है कि आपको अपना करियर कैसे ढूंढना है, आपको क्या चीजों को यूज करना है, एंड कैसे आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो, क्या आपको यूज करना है इस चीज के लिए। ठीक है। हाय अवंती, सब बढ़िया यार, आप कैसे हो? Is this 18 to 25 age just hard for everyone, or just I'm seeing it everywhere? Well, 18 to 24 years is hard, considering that we are actually going through a lots of changes in this time period, and we are relatively new to the lifestyle. Like we are growing up, we are adults. So of course it is hard for everyone. Like we are really finding our uh, standing in the world. Like where do we stand, what sort of skills do we have, what is it that we want to prioritize? Should we like end up chasing love right now? Should we end up chasing career? Should we be making money? How should we deal with our parents? What is it that we want to do we want to marry? Do we want to like what do we want to set as our priority in our life? We are really just exploring things at that time, so of course it is going to be hard. It's going to get easier as you age, trust me. That's assuming that you don't give up working. You start and set up a very healthy foundation. You don't develop this self negative belief about yourself that okay, it is all over, there is nothing else left, I'm stuck in a loop, for me it's all over. The more negative you are, the harder it will be for you. So why make it hard harder for yourself? Because it is already hard as it is. So why do you want to even like get your own negative self belief? At least trust and support yourself that okay, this is something hard that I'm going through. As a result, what can I do? I can just look forward, right? I can look towards the future that yes, I'm going to change things for myself, I'm going to improve my life, and whatever I need to do in order to improve that, I will do it. It might not be that I will take one step and in that day itself like that step will be enough, but any start is better than no start, right? If you're just like not doing anything, then even taking one step is a big deal, and it's step by step that you reach towards the goal. Got AIR 23 in GE advanced. Thanks for your guidance. Congratulations, Ayush. कहाँ से हो भाई? मैं गुजरात से हूँ, रहता हूँ मैं कोलकाता में।
स्टक इन लूप, तो लूप से बाहर निकलो. लूपिंग लूपिंग. डू देयर एनी करियर इन एमएससी साइकोलॉजी, ये भी सोच रही है. देखो जितना आपने मुझे बताया तृप्ति, आप बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे हो अभी. सो आई वुड आस्क यू कि अभी आप सोचना बंद कर दो और कोई भी एक चीज चूज करो, एंड फिर साथ साथ जब वो चीज होती चली जाए ना, वो नेचुरली उसको होने दो. अभी इतना मत सोचो कि ये करूं या वो करूं या वो करूं. ठीक है, अभी कोई भी एक चीज चूज करो. अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम से प्रिपेयर करते करते तंग आ गए हो ना, देन चूज एनीथिंग, जस्ट चूज एनीथिंग, गेट आउट ऑफ इट, उसमें फोकस करो. जो भी आप चूज करते हो उसको अपना टाइम दो, अपना रूटीन दो, और उसमें अपना अपना रूटीन बनाओ थोड़े थोड़े टाइम के लिए. एटलीस्ट 3 to 6 months के लिए ये सारी चीजें सोचना बंद कर दो, काम करना चालू कर दो. दैट विल सफाइस. ओके. और अब इसमें कुछ भी चूज कर सकते हो आप, बाय द वे. अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये कर लो वो कर लो, और गलत भी चूज करो कोई बात नहीं, लेकिन करो चूज एंड आगे बढ़ो. ये जरूरी है ज्यादा. ना कि आप यही लूप में फंसे रहो कि आप सोच रहे हो कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ. नहीं. Just thinking is not enough. Everyone thinks. So you have to take action along with your thought. आज तक किसी ने सोच के कुछ नहीं बदला है, लेकिन लोगों ने करके बहुत कुछ बदला है. सोचो. सोचना मैं नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे कि सोचना बुरा है, लेकिन करने के बाद सोचो. करने से पहले मत सोचो. Bro, you are stuck. It's looping. Okay, you mean, what do you mean it's looping? You mean the stream is looping? Guys, मेरी stream में क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? अनमोल, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन नहीं था. गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब एंड प्रोफेशनल कोर्स लाइक सीए CS, प्लीज टेल थोड़ा अच्छे से. आई एम कंफ्यूज, प्लीज टेल. अनमोल, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स. बैंकिंग जॉब्स और गवर्नमेंट का लेकर CS इसमें मुझे एक्सपीरियंस नहीं है. नाम मुझे इसके बारे में आइडिया है, तो मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता कुछ भी. आप YouTube में सर्च करो इन सारी चीजों को, आपको मिल जाएगी. बहुत सारे लोग जो जिनके चैनल में आपको कुछ ना कुछ शायद सीखने को मिलेगा, जो पास्ट में ये चीज कर चुके हैं, वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे इस चीज को लेकर. मैं जनरल करियर एडवाइस दे सकता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट को लेकर या प्रोफेशनल कोर्स के बारे में कुछ जानना है, मैं नहीं बता सकता आपका. इट्स बिन 30 minutes. ओके, मेरा जवाब दे दो. स्ट्रेस हो रहा. अच्छा, आपका भी जवाब दे देता हूं मैं. भैया कल एग्जाम है, कुछ नहीं पढ़ा, क्या करूं? देखो, अब वैसे भी कुछ नहीं हो सकता. अगर आपको कुछ पता है तो वो करने की कोशिश करो. और सबसे मेन इंपॉर्टेंटली, आप अभी स्ट्रेस लेकर कोई फायदा होने वाला नहीं है. सो जितना अगर कुछ हो सकता है तो कर लो, वरना सो जाओ. और ठीक है, जितना कर सकते हो उतना करो. अगर कुछ याद है पहले से तो उसको ही मतलब कुछ पहले ही पोर्शन कंप्लीट किया हुआ है तो उसको ही कर लो, वापस रिवाइज कर लो. Is there any scope in BSc biotechnology and food technologist in India? There is scope. There is definitely scope for niche fields, considering you want to do, you are going to do some groundbreaking research. Like if you are ready to do something like contribute something to a field, of course you are going to get the results for it. You are going to make scope of it. So if you have some ideas, if you want to do something for like let's say like you can start BSc biotechnology. What are you going to do in BSc biotechnology? What is your long term goal in your career once you get like BSc biotechnology? What is it that interests you about BSc biotechnology? These are some of the questions that you need to ask yourself, which will help you answer that whether there is scope or not. It's not about scope. It's more of a personal thing. Someone might have a scope in it, someone might not have a scope in it. So it's very wrong to ask like if there is a scope in this. Scope is in everything. It all depends on you as a person, what your interests are, what your motivation is, what you are looking for, what your priorities are in life. Software engineer versus MBA for a long term, both tier 1. It entirely depends on your interest. If you are more interested in the technical end of things, if you want to get into IT, if you are interested in technical things, then software engineer, of course.
MBA if you are interested in the management end of things, if you are more of a people's person, like you want to manage people. And software engineer if you are more into technical things, because like down the line, of course, even a good software engineer, a lot of them get into management in the future, in the long term. But I've rarely seen like management people getting into like coding, technical skills. But usually, one thing else, one more thing that you can do is like you can combine both of these. Like it can act as a hybrid as well. You can take up software engineering at the same time. You can get your uh, management skills by actually working getting some skills for management, of course. And how do you do that? You like do that by interacting with more people. You do that by creating businesses or getting into sales. That's how you can develop your management skills while also having technical skills. And or you can do vice versa. You can select MBA, and down the line you can also shift into coding. You can develop technical skills, because nowadays learning skills is no more like a barrier for people. Skills are easy and available to learn online. The only thing needed is motivation and dedication or consistency. Okay. Is doing something creative as a career option good option to consider being a freelancer? If you have the mental capacity for it, then sure. Because as it is in our country, being or doing something creative is not looked up to. But now it's changing, of course, with social media, with lots of exposure, with the growing economy, like the growing awareness, not economy, awareness. With the growing awareness around art, people are starting to take up niche fields. So of course there is like, if you're willing to do it for the long term, if you're willing to like go against people, and do it only as something like something out of passion, something that you're really sure about, then yeah, it's not a bad option to consider if you're willing to actually put in the work for it. And also at the same time, you will have to build your side career as well. Like you will have to have something that you are earning from until then, because of course at the initial phase you are not going to be making much from your creative career. Like this YouTube is an example of a creative career. It took me like it took me like 4 to 5 months to get monetized in the first place, and it took me like what 6 months or something to make my first dollar, like first money, like first income from YouTube. And that was after I already had like studied YouTube extensively. I was watching about YouTube, I was researching what kind of videos I should be making. I was really into this thing, like making YouTube videos. I'd always thought that this is the kind of personality that I have, that I'd be guiding people, I'd be talking to them, I'd be expressing my thoughts, my opinion, and all of that. After that, it still took me 6 to 7 months, and I'm still going here. Like I haven't made this into a sustainable full time business yet. I don't make that kind of money from this. But of course, I know if I give this more few more months, I can scale this up. I can like get myself better, improved, and I can, as a result, also like have this turn into a full time income for me. Also, that's it for questions today. I won't be taking any more questions. Okay, we can talk. I'm going to be talking, but I'm sorry, I won't be taking any more questions today. I'm sorry, the questions have recently been taking a toll on me. I cannot be answering so many questions in my streams anymore. I don't know why. I'm sorry, guys. I will be answering as many questions as I can in my next stream, starting next stream. Like I stream every day for all those who are not aware of it. Yes, आयुष जी, मैं आपको पहचान गया. What if I do distant degree? You can do a distant degree. Distant degree is not bad. It in fact has a lots of advantages, but most people cannot deal with a distant degree, because distant degree में ये प्रॉब्लम है ना कि आप घर में बार बार बैठे बैठे अगर आप कुछ साथ में नहीं कर रहे हो ना, तो आप डिप्रेस हो जाते हो, एंड फिर आपकी मोटिवेशन चली जाती है. How to select background for YouTube video? I don't have aesthetic room. Then just make it with whatever aesthetic, like whatever room, whatever you have available. Do not think about getting an aesthetic room or getting any aesthetic. Like the point here would be to post your videos at first,
uh, after some time you can get like you can go outside and make videos if you have some empty spaces, something, some place where nobody else is going to be at, maybe early in the morning, or maybe yeah, probably early in the morning. That's where you can use outside for shooting videos. But again, that is not a bottleneck. Like I see all the time people with very weird backgrounds are still making, like I'll give you an example. Actually, you should go check that YouTuber out. I don't know his name exactly. He recently made a channel. It's been 2 to 3 months, or maybe 6 months since he's been posting videos, and he got like 100K plus subscribers. And his background is literally just a basement. It's a basement. If you understand what a basement is, it's literally dirty. Like back there, it does not even look like aesthetic at all. But all you need really is motivation, or like consistency and passion, like a topic that you really are passionate to speak about. Then your room will not matter. Just think about it like this. Like if I'm right here right now, like let's say my background changes, how much do you think it will change my content? How much do you think my background has mattered in my content? If you ask me, I would say that not much, because the video that blew up for me, the video that crossed like 250K views for me, that had actually very poor lighting. I was not even wearing a mic in that video. The audio was terrible, but it still blew up to 250K plus views. Okay. And that was like my beginner phase. I was literally just like practicing stuff. I was just making videos every day. Like that was my goal. Yeah, exactly. Content matters much more. What is it that you have to provide to people? Like how, why would people listen to you? Why should they give you like their time, their precious time, when they could be scrolling on their phone? They could be getting instant pleasure, instant gratification. They could be doing something else. They could look at something entertaining. Why would they look at you? What pain point would you solve for them? उस नीश पर और कोई वीडियो ना बनाते हो? कौन सी नीश की बात कर रहे हो आप? भाई आज के टाइम पे किस नीश और वीडियो बनाए? आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करना चाहिए, जो जो चीज के लिए आप पैशनेट हो. I have heard that in an interview they will ask more personal questions like about my family than the industry ones. Is this real? Of course they will ask personal questions, लेकिन personal से ज्यादा आपकी contributions ज्यादा matter करती है. So if you're a fresher, of course they will ask you personal questions, more personal questions. But एक बार आपके पास experience हो, तो फिर आपके experience के ऊपर ही बात होती है. You are doing YouTube as a side hustle. No, it's not a side hustle for me right now. It's like a full-time thing. I fully intend to scale this up into a full-time business. कि मेरी इतनी इनकम इससे मुझे बनानी है कि मतलब एटलीस्ट मेरे जॉब से भी ज्यादा हो इसमें पैसे. And it is an initial, like it is an eventual thing, of course. Bro, please read my question above. No, I'm sorry. I think this is like it. आज के लिए इतना ही होगा स्ट्रीम. थैंक यू गाइस फॉर कमिंग टू द स्ट्रीम. अब बस 2 और मिनट और फिर आज के लिए इतनी होगी. ठीक है. आई वोंट बी टेकिंग एनी मोर क्वेश्चन. आई एम सॉरी गाइस, मेरा गला सूख रहा है एकदम. अब मैं और आंसर नहीं कर सकता. मेरी आदत खराब हो गई, पता है गाइस. मैं पहले इससे लंबी स्ट्रीम करता था. मैं 1-2 घंटे, मैंने 2 घंटे की भी स्ट्रीम की हुई है. एंड मैंने अपनी आवाज मतलब पूरा वो, मैं सोचता भी नहीं था. बट अब मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ यार. सो आई एम लाइक आई विल आंसर दीज. बाकी के जो भी क्वेश्चन है मैं हर रोज स्ट्रीम करता हूँ. तो आप कोई, आप मेरे स्ट्रीम्स में आ जाना. आपके क्वेश्चन मैं कभी ना कभी तो ले ही लूंगा. ठीक है. बट लेट मी टेल यू गाइस कि डूइंग दिस इज नॉट इजी. ओके, मतलब हाँ, हो सकता है बहुत लोग ये देखकर इंस्पायर हो रहे हो कि हाँ यूट्यूब, वो यूट्यूब, बट बहुत मुश्किल है. एंड आई हैव इट लाइक आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस. ओके, आई हैव पुट इन क्रेजी अमाउंट ऑफ आवर्स. एंड मैंने अपनी पूरी वो, अभी भी मुझे लगता है कि मैंने पूरा नहीं दिया. लाइक इवन इफ आई गिव इट मोर, ऑफ कोर्स देयर विल बी ग्रोथ. आई एम स्टिल नॉट लाइक 100, आई एम नॉट गिविंग माई 100%. एंड मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ दिया हुआ है इसको. मैंने इसका मतलब इसके लिए मैंने रात रात जगकर एडिटिंग करके सब कुछ किया हुआ है. मैंने कितने, मेरे 340-50 वीडियो होने आए हैं अब. इतने वीडियोस अपलोड किया, और ये सारे हर रोज वाले वीडियोस है. ऐसा मत समझना कि मैंने ये 5 सालों से किया है. मैंने ये लास्ट 1 साल के अंदर ही इतने वीडियोस डाले, जितने भी डाले हैं मैंने. ठीक है. लेकिन द पॉइंट इज के
देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर इन इट. इट्स नॉट लाइक कि हाँ आप सोचो कि हाँ मैं एक दिन उठकर मैंने कैमरा पकड़ लिया और मैं अपनी बातें बताने लग जाऊंगा तो हो जाएगा. इट विल बी अ फाइट ऑलवेज. इट विल बी एन अपहिल फाइट. तो आपके लिए पैशनेट होना इस चीज को लेकर बहुत जरूरी है. कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है, फिर आप इसको सस्टेन कर पाओगे लॉन्ग टर्म में. क्योंकि ये लॉन्ग गेम है कि मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि अभी ये एक साल में ही मैं इतना मतलब बहुत बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा, मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे मेरे. ये लॉन्ग टर्म गेम है, मुझे पता है 2 से 3 साल तो मिनिमम लग जाएंगे. और उसमें भी मुझे इंप्रूव करना पड़ेगा. इस तरह से नहीं चलेगा. क्योंकि अभी जो मेरा कंटेंट है ना, इट्स ओनली बिगिनर लेवल. जितना भी आप बोल लो कि मेरा कंटेंट बिगिनर लेवल ही है, देयर इज मच मोर वैल्यू दैट आई नीड टू प्रोवाइड. दिस इज नॉट इनफ फॉर मी. ब्रो रीड आशीष क्वेश्चन. आशीष जी आपका क्वेश्चन मैं कल की स्ट्रीम में पढ़ लूंगा यार प्लीज. मैं आपका क्वेश्चन आप कोई और स्ट्रीम में ले लूंगा यार. अगर आप आपसे हो सके, यूजुअली मैं इसी टाइम पे स्ट्रीम करता हूँ, तो आप कोई और दिन में आपका क्वेश्चन ले लूंगा. आज मैं नहीं ले पाऊंगा. आई एम सॉरी. यू आर डूइंग गुड. आई नो यू विल गो फार. लेट्स सी. आई थिंक मैं अपना पूरा नहीं दे रहा हूँ. लाइक एट दिस पॉइंट राइट नाउ आई थिंक आई एम इन दैट फेज जहां पे अब मुझे आई हैव टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल. एक लेवल मैं ऑलरेडी पहुंच गया हूँ विच इज 5,000 सब्सक्राइबर्स. 5,000 प्लस सब्सक्राइबर्स. आई ऑलरेडी स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम दिस. मोनेटाइज हो गया चैनल, अर्निंग होने लग गई है, जो भी है. लेकिन आई हैव टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल नाउ. सो दैट इज माई प्लान, दैट इज माई गोल विद दिस चैनल. एनीवेज गाइस 9 बज गए हैं. थैंक यू फॉर कमिंग टू स्ट्रीम. ओके, आज के लिए इतना ही होगा. बाकी आपसे कल मिलूंगा. जिनको नहीं पता मैं हर रोज स्ट्रीम करता हूँ. और जिनको अपनी प्रॉब्लम्स मेरे से वन ऑन वन डिस्कस करनी है तो आप मेरे कंसल्टेशन सर्विस को ले सकते हो. उसमें मैं आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा, आपको गाइडेंस भी दूंगा, आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू समझाऊंगा भी चीजें. ठीक है. सो यस गाइस, आई विल सी यू इन टुमारो स्ट्रीम. तब तक के लिए बाय बाय और हैव अ गुड नाइट.